So, ce sont-ils, je me sens, tu te sens, ils, elles se sont, nous nous sentons, vous vous sentez, ils, elles se sentent. C'est clair. OK? Clear. So, I'm saying, c'est qu'on, répète après moi. C'est qu'on, c'est qu'on, C'est quand on se sent bien. On se sent bien avec l'autre. फ्रेंडशिप के बारे में बता रहा है वो कह रहा है कि दिस इज व्हाट दिस इज when one feel good with the others c'est clair avec l'autre tell me yes and no this is when c'est quand on se sent bien one feel good with others c'est clair clear. now Abhinav, is it clear to you? Yes. Now, rep chapter 1, Lami virtual. Quel est le mot Lami virtuel? Lami virtuel. Rep chapter 1. Lami virtuel. ये टर्म्स कुछ करनी होती हैं आपको बिकॉज आपको अपना सबमिट करना है प्रोजेक्ट मेरे को डेली बेसिस पे यू सबमिट वॉइस यू प्रैक्टिस एट योर हाउस से क्लियर यूज Lami virtuel. C'est une personne. Rep chapter 1. C'est une personne. C'est une बोलो आप इसको C'est une because I want you will come to know vocabularies now. I want you to speak the language out because at least your tongue used to be the language. C'est clair. C'est une personne qui est donc qui est dans qui est dans nos contacts non qui est dans nos contacts. C'est clair. Now what I'm saying, this is a person which is in the contacts. Okay. L'ami virtuel, c'est une personne. बोलो आप इसको. C'est une personne. This is c'est une personne. C'est une personne. This is a person which is qui est, which is dont we have inside in our contact no contact. Is it clear to you? Sir, I have a doubt. So virtual friend in English we say virtual friend. So why virtual in French is after friend? So it's friend virtual. Lami virtual, exactly. We say Lami virtual. If I can say virtual Lami, no. I will say Lami virtual. C'est clair? Because we have a noun, then we have adjective. C'est clair? Yeah, okay. Now, for example, we have, I will give a lot of example, the delicious food. The delicious food. But in English, we have delicious is first. I will say les repas délicieux. So noun, then we have délicieux. C'est clair? So noun plus then adjective. C'est clair, Monsieur? Why? Is it clear to you? C'est une personne qui est dans nos contacts. This is a person which is in the inner contact. C'est clair? So répétez après moi, l'ami virtuel. Répétez après moi s'il vous plaît. L'ami virtuel, c'est une personne. Répétez après moi. C'est une personne qui est dans son contact. Yes, which is in your contact. No. Qui est dans nos contacts. Is it clear to you, Monsieur? Yes, sir. We won't pronounce dons or it's don. No. We will not pronounce. We can say don because S would be silent at the end. C'est clair. S would be silent at the end. Don. C'est clair. Why? Is it just because we have a consonant after that? Exactly. Because S we have a consonant. C'est clair. Why? No, I'm not talking about the S. I'm talking about the NOS. No. If there was a vowel in there, would have been no contact. No. Basically,
If if we have a consonant ending, right, that would be silent. That is nos. No, I can say no. Evidamo, if we have a vowel, then we have to combine the sound. Say Claire. Why? Okay. Yes, Muzabir is Yeah. you are right. Exactly. Say Claire. Why? D'accord? Why? So now, Yeah. c'est une personne qui est dans nos contacts. This is a person which is in the contact, in our contact, no contact, our contact. Claire? Quelqu'un, répétez après moi. Very important. बोलो आप. Quelqu'un. Quelqu'un. Speak the language, please. Quelqu'un. Kelka. Quelqu'un. Quelqu'un is someone. Quelqu'un. Con. Quelqu'un con. Ne con. Quelqu'un con ne connaît. Ne connaît pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Forcément. Dans la vraie vie. Répétez après moi. Dans la vraie. Dans la vraie. Bravi. Mais qui partage des choses avec nous. Mais, répétez après moi. Mais मैं qui partage ही partage des choses the shows avec nous. avec Nous. nous. What is this? Mademoiselle, quelqu'un. Quelqu'un is someone. Répétez après moi. Quelqu'un. Quelqu'un is some. Quelqu'un, Is it clear? someone, I'm saying someone qu'on ne connaît pas. We do not know. Forcément. Necessarily. I'm saying quelqu'un, someone qu'on ne connaît pas forcément. We do not know necessarily. Okay? In the real life, in the vrai, we have real. Vrai. Pen down, please. Vrai. Don't we have inside your life. Don't la vraie vie. We have life. In the real life. I'm saying, देखो समझो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से. Quel est l'ami virtuel? I'm saying quelqu'un, someone qu'on ne connaît pas, we do not know necessarily, but mais qui partage des choses, but we share something with us, avec nous. C'est clair. Tell me yes or no. Yeah. Okay. Now, il y a aussi. No, I can say mademoiselle et monsieur. See, this is okay. C'est le copain ou la copine. Répétez après moi. C'est le copain. Copain, we have a boyfriend. C'est le copain ou la copine. Copine, we have a girlfriend. C'est le copain ou la copine que j'appelle. Que j'appelle. Répétez après moi. Que j'appelle. C'est clair. Que j'appelle. J'ai envie. Quand, very important phrase. Quand j'ai envie, इसको use करना है language को आपको. J'ai envie de sortir. J'ai envie de sortir. Is it clear to you? J'ai envie de sortir, mais I will explain to that topic. Don't worry. Mais à qui je ne rencontre pas. À qui je ne raconte pas. Raconte pas des choses personnelles. Raconte pas des choses personnelles. Now, what is this, mademoiselle? What is this? Répétez après moi, quelqu'un, someone. Répétez après moi, s'il vous plaît. Quelqu'un, someone.
we do not know each other. We do not know. Quelqu'un ne connaît pas forcément in the real life, mais qui partage des choses avec nous, but who share the things with us. Is it clear to you? Tell me yes and no. Yeah. Harpreet, is it clear to you? Yes, sir. I'm saying c'est le copain is the boyfriend ou la copine, girlfriend que j'appelle when I call, that I call, que j'appelle when j'ai envie de sortir. I want to go out. J'ai envie. J'ai envie is my very beautiful phrase when you say I want, I have a wish. J'ai envie. Répétez après moi. J'ai envie. I wish that. I want that. C'est clair. J'ai envie. J'ai envie de sortir. To leave. De sortir, to go out. Mais. À qui? To whom? À qui? Pen down please. À qui? To whom? Je ne raconte pas des choses personnelles. But I do not tell the person. Je ne raconte pas. Okay, I will explain to you. अच्छा, ये समझ आ रहा है आपको? Tell me yes and no. Simar? सर आ रहा है समझ, पर इतना नहीं आ रहा, हाँ, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि नई वोकैबुलरीज है ना. बोलो. Yes. राconte. राconte. You have to tell. आपको उसका प्रैक्टिस करना है. सिमर. Yes, sir. Yes, sir. Because obviously that's a new version. Because ये तो करना ही है हमने. अगर हमें टैफ करना है तो I have to use this version. Say Claire, tell me yes or no. Because you have to speak the language out. You have to tell your, lot of things. Explain your topics. So raconte is my verb to tell. So je ne raconte pas. What is this? You know how to make negation? How Yes, sir. So negation. Yes, sir. Ne pas. Ne pas is my negation and my verb would be raconte. Raconte. देखो सिंपल है ये तो. अभी हम लाइंस कर रहे हैं. Quelqu'un, someone, ne connaît pas forcément, that do not connaît. We have verb connaître is to know. Connaître इसका पूरा प्रैक्टिस चाहिए मेरे को आपका. Connaître is my verb to know. Say Claire, is it clear to you? Connaître. I'm saying someone that do not know necessarily, forcément, necessarily in the real life. Dans la vraie, we have real. In the real life, we have a life. Dans la vraie vie. C'est clair, Simar? Yes, sir. Mais, but, qui partage des choses avec nous. But partage. So we have verb partager is to share. Pen down, please. Partager is a verb to share. Full verb. But they share the things with us. C'est le copain. This is the boyfriend. Ou la copine or the girlfriend that I call. Que j'appelle. That I call. Que j'ai envie de sortir. When j'ai envie. J'ai envie is, when you say I wish that. I have a hope that. J'ai envie. Répétez après moi. J'ai envie. बहुत important verb है आपका. J'ai envie de sortir. Say Claire. Is it clear to you? Yes, sir. J'ai envie de sortir is I want to. I have wish to leave. De sortir. Mais. À qui? The whom. To whose. Je ne raconte pas. I do not tell the things personally. Is it clear to you? Yes, sir. Yes. दोबारा पढ़ो महात्मा सेल ऊपर से. Quelque connaît. हाँ. Quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément dans la vraie vie, mais qui partage des choses avec nous. C'est le copain ou la copine que j'appelle quand j'ai envie de sortir. Envie de sortir, mais à qui je ne raconte pas des choses personnelles. Repeat it, please.
Quelques ne connaît pas forcément dans la vraie vie, Vrai, mais vrai. Speak of vrai. vrai, Vrai, we have real life. Vrai means we have real life. Okay. vrai vie, mais qui partage des choses avec nous. C'est les copains ou la copine que j'appelle quand j'envie de sortir, mais et qui je ne ressens pas des choses personnelles. Personnel. Personnelles. Uh-huh. Say Claire. Yeah. Tell me yes and no. Claire. Yes, sir. Sure. अच्छा समझ आ रहा है आपको? टेल मी सिमर, सिमर, हरप्रीत एंड अभिनव, समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. देखो आई अंडरस्टैंड कि ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ आपको, दिस इज समथिंग लाइक लामिती फ्रेंडशिप. सो ऐसे टॉपिक आपको बोलने आ सकते हैं ना क्लैर? Yes, sir. देखो इट्स नॉट अबाउट टॉपिक बोलना आ सकता है, टॉपिक लिखना आ सकता है. आपको वोकैब पता लगी तभी तो आपका लैंग्वेज फ्लो कैसे बनेगा. दिस इज समथिंग लाइक वी आर डूइंग द मूवमेंट विद फ्लो ऑफ द लैंग्वेज. आपको ये बैक टू बैक फटाफट बोलने हैं, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू हैव टू सबमिट योर वॉइस रिकॉर्डिंग आल्सो. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. तो ये तो हैवी तो नहीं हो रहा. आगे आगे ये इसका अभी प्रैक्टिस करोगे जो मैंने अभी करवाया आपको. Yes. मुझे बताओ ना, हैवी हो रहा Yes, है? sir. हैवी हो रहा है? Yes, sir. थोड़ा सा heavy हो रहा है. ओके नाउ अब आपका टास्क क्या है? योर टास्क इज पार्ले. Répétez après moi. Parler Parler. relation amicale. बोलो इसको आप. Parler. देखो लैंग्वेज में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगी, तो आपको ये पूरी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपको कि आपको कैसे कॉप अप करना है अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ, अपना ओरल के साथ. ये हर एक चीज हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे. सो आपको सब प्रैक्टिस करना है. Parler d'une relation amicale. Speak of a relation, friendly relation. Relation amicale, friendly relation. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Amicale, friendly. Say Claire. Yes, sir. Sure. Is it clear to you? Yes. Yes, sir. ठीक है. तो ये इसका आपको क्या करना है, सबमिट योर वॉइस रिकॉर्डिंग. बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो सेंडिंग योर वॉइस रिकॉर्डिंग इज नॉट अ टास्क कि मेरा टास्क खत्म हो गया. नहीं, इन टर्म्स को आपको डेली बेस पे 15, 20, 30 बार बोलना है. से क्लियर? Yes, sir. then only your tongue will get used to the language. Can you do that? Tell me yes or no. Yes, sir. Is it clear to you, Abhinav? Yes, sir. Yeah. So speak 30, 40, 50, 60 times these phrases so that it will fix in your mind and you'll get a flow in the language. Say Claire. Okay? So Yes, sir. Yes, sir. what I can do is okay, that's fine. I will try कि मैं आपसे और कुछ रिकॉर्डिंग शेयर करूं. क्लियर? ये तो आपको आपका सेशन तो आपको मिलेगा ही, other recordings भी. So please watch those recording also and submit your task without fail. Say Claire. Why? Yes, sir. चलो मैं फिर आपसे फिर मंडे मिलूंगा, तो संडे हमारा क्लास नहीं होगा फिर. ठीक है सिमर? I will meet you on Monday so that you can do a practice also. Claire? Okay? Okay, sir. Yes, sir. Sir, I'm off on Sunday, so I want to do some practice with the writing task. So where can I find, like for writing tasks, like Writing some task. I will, but okay, no problem. I will share some writing task format in your WhatsApp. Claire? Okay. Why? Yeah. Yes. Okay, I will share some task. Is it clear to you? Why? Yeah. All right, sure. All right.